Hello everyone. So today we'll look at the resources of South America. South America के resources, important resources को we'll see. So if you remember in the last video, I discussed about the important mountain ranges, the plateaus, deserts, rivers and lakes of South America. So in this one we'll talk about the resources. And if you remember नॉर्थ अमेरिका में भी हमने जब रिसोर्सेज पे डिस्कशन किया था तो वी स्टार्टेड विद द एनर्जी रिसोर्सेज सो लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जी रिसोर्सेज फर्स्ट रिसोर्स विल टॉक अबाउट first resource that we will talking about is the coal, but problem is that the coal is not found in abundance. The most important energy resource in today's economic development system is the coal. बट कोल बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में साउथ अमेरिका में नहीं मिलता है तो कोल का लिमिटेड जो प्रेजेंस है दैट इज मेनली इन कोलंबिया कोलंबिया का कोल का प्रोडक्शन इज सो मच दैट इट इज बीइंग एक्सपोर्टेड आल्सो टू यूरोपियन कंट्रीज बट other than Colombia, if you look at the other important countries such as Brazil, Argentina, Chile, इन सब में भी coal production होगा but that coal is mainly for domestic utilization. So coal is not in prominence, it is not in abundance. So another important resource that we'll talk about is petroleum or the oil. So when we talk about oil, अगर आपको याद हो एक लेक मैंने बताई थी मराकाइबो लेक सो द ह्यूज रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम इज फाउंड इन वेनेजुला वेनेजुला में यहाँ पे मैंने आपको एक लेक बताई थी मराकाइबो लेक सो दिस लेक हैज ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम यही पास में हमने एक रिवर डिस्कस की थी ओरिनिको रिवर. This Orinoco belt Orinoco belt has also huge reserves of petroleum. And over here, if you look at the map of South America, इस region को बोलते हैं लानोस, northern part of Colombia and Venezuela. यहाँ पे लानोस मिलेगा. Llanos has also significant deposits of petroleum. Okay, so Llanos, Maracaibo, Orinoco. Further देखते हैं ब्राजील में we have huge deposits of again petroleum oil. So Brazil में this part, this continental shelf is called Campos Basin and इसके नीचे another basin called Santos Basin. यहाँ पर भी आपको you'll find huge deposits of petroleum. Then moving further, अर्जेंटीना में भी थोड़ा बहुत मिलेगा बट मोस्टली दीज आर दी पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम रीजन्स इन साउथ अमेरिका. सेकेंड आफ्टर पेट्रोलियम विल सी गैस द नेचुरल गैस.
let's have a look at the natural gas of South America. Natural gas is also in abundance. तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर. तो starting with Venezuela, ये Maracaibo Lake. This lake has again significant deposits of natural gas. Orinoco Basin. This Orinoco belt or basin, significant deposits of natural gas. Natural gas. Then this part, Brazil का, Campos and Santos. So जहाँ जहाँ पर अपने को पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिल रहे थे वहाँ पर नेचुरल गैस भी अबंडेंस में है. देन अदर देन दिस, यहाँ पे अर्जेंटीना में एक पार्ट है, एक रीजन है कॉल्ड न्यूक्विन रीजन. This Neuquén region has deposits of reserves of natural gas, and then Bolivia has also notable or significant natural gas reserves. Bolivia यहाँ पर कहीं पे. So Bolivia में एक region है called Tarija Basin. So this Tarija Basin has significant reserves of natural gas. So natural gas and petroleum oil is in abundance in South America. Then in all those regions जहाँ पे natural gas मिल रहा है, on those regions recently shale formations have been found. और मैंने बताया था नॉर्थ अमेरिका के डिस्कशन में भी wherever we have shale formations वहाँ से हम लोग shale gas extract कर रहे हैं. तो अगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट शेल गैस जहाँ पे एक्सट्रैक्ट होता है उसके रीजंस दिखाऊं. शेल गैस नॉर्थ अमेरिका में भी मैंने डिस्कस किया था. आई टोल्ड यू इट इज द अल्टरनेटिव टू नेचुरल गैस. इट इज शेल ऑयल इज ऑल्सो देयर. सो इट इज अल्टरनेटिव टू द conventional source of energy. Anyway, so मेनली जो शेल गैस का प्रोडक्शन है दैट इज इन दिस न्यूक्वेन बेसिन. अर्जेंटीना में जो मैंने बताया जहाँ पे ह्यूज अबंडेंस ऑफ नेचुरल गैस इज देयर along with the shale gas. Then तारीजा बेसिन जो मैंने बताया बोलीविया का, this region has also huge reserves of shale gas along with the natural gas. अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने एक रिवर ड्रॉ की थी, पराना रिवर. So this Parana river basin, this Parana basin has also significant reserves of shale gas. These are the important areas जहाँ पे shale gas का prominently production हो रहा है in South America. So एक दूसरा एनर्जी रिसोर्स देख लेते हैं, यूरेनियम. ऑल्दो अगेन यूरेनियम इज नॉट फाउंड इन अबंडेंस. जैसे कोल अबंडेंस में नहीं है वैसे यूरेनियम भी अबंडेंस में नहीं है. बट फिर भी लेट्स हैव अ लुक एट यूरेनियम मिनरल कहाँ पे मिलेगा. तो मेनली एक एरिया में हम लोग प्रोमिनेंटली विल सी
the production of uranium, and that is in Brazil. This area is called Minas Gerais. Minas Gerais. So this area is famous for uranium production. Although uranium is not present in abundance, जैसे आप को शेल गैस मिल रहा है, ऑयल रिजर्व्स मिल रहे हैं, उतना एबंडेंस में यूरेनियम साउथ अमेरिका में नहीं है. बट दिस एरिया मीना जेरेस, अभी आप देखोगे, इट इज फेमस फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स, वन बीइंग यूरेनियम. ओके, then after uranium, let's move to the metallic minerals. So starting with iron, but again, like coal, iron is also not found in abundance. So iron के लिए मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि iron is not found in abundance. It is not in prominence. So for most of the needs of iron, the countries are dependent on import of iron. But iron के अलावा, if you look at minerals like gold, silver, copper, South America has huge deposits of these minerals. So let's start with gold first. So starting with the gold deposits. Gold deposits. So Peru is the largest producer of gold. Peru is the largest producer of gold, not largest in the world. We can say it is among the largest producer. So Peru has significant deposits. Peru, if you remember, this country was Ecuador, and below this we had Peru over here. So this Peru over here, we have significant deposits of gold. Peru region, significant deposits. So Peru in South America is the largest producer of gold, and in the world it is among the largest producers. Then coming to Brazil, has again significant deposit of gold. This Minas Gerais region, this region I told you. Where we had seen the significant production of uranium, यहीं पर same area में you'll find significant production of gold as well. Then Venezuela has also significant, Venezuela and Guyana. Guyana region, if you remember, Guyana highlands मैंने बताए थे यहाँ पे. This has again significant deposits of gold. Okay, so this was about gold. Now let's see the silver production. Silver production. So again, Peru, where we used to find gold, the same reason we have significant deposit of silver as well. Silver. And then over here you have seen a country called Bolivia. Bolivia is also famous for silver production. So Peru, Bolivia, and Chile. This country, if you remember, over here.
this one. Chile is also famous for Chile, or Chile is also famous for silver production. So Chile has mainly, in the world, it is famous for copper production. It has the largest reserves of copper in the world, as well as it is the largest producer of copper in the world. So, but the copper deposits have also the ores of silver. तो इसलिए यहाँ पर silver production भी होता है. Okay. Now coming to copper. Copper production in South America. So I told you Chile is the largest producer of copper in the world. Largest producer with extensively large copper deposits. So Atacama region, if you look at over here, this entire part, Atacama, if you remember, is famous for production of copper. Atacama region. So Atacama region is famous for copper deposits, copper production. And over here you see Peru. Peru is second largest producer of copper. So Chile and Peru have been the countries which have largest production of copper in the world. Let's see another important resource that is found in साउथ अमेरिका कॉल्ड लिथियम. लिथियम इसलिए मैं आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि ईवी बैटरीज का कल्चर डेवलप हो रहा है. तो ईवी व्हीकल्स जो हैं, जो मोस्टली जो बैटरी बन रही है, उसमें मेन रिसोर्स इज लिथियम. सो लिथियम प्रोडक्शन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो देख लेते हैं. एंड गुड पार्ट इज दैट in South America, lithium is present in prominence. So this is among the most important resource of South America. Okay. So let's see the lithium deposits in South America. So lithium, एक triangle famous है, lithium triangle. Is famous in South America for the deposits of lithium, and that comprises of, this is the triangle. This is the triangle. So it comprises of, over here it is Bolivia, this is Chile, and this country is Argentina. So this triangle, which comprises of Bolivia, Chile, and Argentina, has huge deposits of lithium, and it is world famous, known as lithium triangle. The lithium triangle is the most important thing that you should remember. और कौन सी countries इसका part है? Could be a question for the examination. So again, एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट रिसोर्स और बायोडाइवर्सिटी ऑफ साउथ अमेरिका. सो अगर आप देखोगे साउथ अमेरिका को, तो यू रियलाइज कि ड्यू टू ह्यूज वेरिएशन इन द क्लाइमेट,
entire South America is rich in biodiversity. You already know that equator and Tropic of Capricorn passes through South America. इक्वेटर रीजन में you already know यहाँ पर अमेजन रिवर थी, if you remember. So this equatorial zone is known as Amazon forest. Locally it is called selvas. कोई भी टर्म आपसे पूछ सकता है एग्जाम में. Selvas is the local name to Amazon forest. So इक्वेटोरियल रीजन में, तो यू नो इक्वेटोरियल रीजन में ऑलमोस्ट डेली बारिश होती है शाम के टाइम पे 3-4 बजे के अराउंड. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, अमेजन फॉरेस्ट. इसके ऊपर अपने को ट्रॉपिकल रीजन मिलेगा. यहां पर मैंने बताया लानोस, कंबोडिया और वेनेजुएला रीजन में. लानोस लानोस इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. So tropical grassland north of equator in countries such as Venezuela, Cambodia, Colombia, it is a grassland, tropical grassland, and that grassland is known as Llanos. So similar to Llanos, another tropical grassland is there. Over here, you'll find another tropical grassland, and this is known as Campos. This is again a tropical grassland, Campos. And below this Campos, there is another grassland, temperate grassland, named as Pampas. This is a temperate grassland. And over here, southern Brazil region, Bolivia region, this part is known as Pantanal wetlands. This is a tropical wetland. It is among the largest wetlands of the world. So Pantanal wetland. UPSC has the tendency of asking such question कि एक एरिया को पूछ लेगा कि ये कहाँ पर लोकेटेड है. तो remember these names. These are the important vegetations, important forest ecosystems which represent the huge biodiversity of South America. So do remember selvas, llanos, campos, pampas, and campos के northern side में, northwestern side में you'll find Pantanal wetlands. So this will be all about the resources of South America. See you in the next session. Thank you so very much. Have a great day.